फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन स्टडी बाइट्स को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन मिलते रहें और नॉलेज आपकी बढ़ती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रतीक्षा। स्टार्ट करते हैं पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से। और ये वो क्वेश्चन है जो CTET 2011 में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एंड इफेक्टिव लेसन्स फॉर टीचिंग अ लैंग्वेज विद। तो ऑप्शन ए है प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ द लेसन, बी है रिकैपिचुलेशन एंड मोटिवेशन थ्रू फन एक्टिविटी, एंड सी है राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, एंड डी है लिस्टिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है रिकैपिचुलेशन एंड मोटिवेशन थ्रू फन एक्टिविटी। तो जो रिकैपिचुलेशन होता है उसका मतलब होता है संक्षेप में, मतलब छोटे रूप में बताना फन एक्टिविटी के थ्रू। ओके, तो ये क्या है, एक इफेक्टिव लेसन है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज फीचर्स ऑफ अ चाइल्ड सेंटर लैंग्वेज क्लासरूम। तो ऑप्शन है इसके ए चिल्ड्रन इंटरेक्ट इन अ टारगेट लैंग्वेज थ्रू टास्क दैट रिक्वायर्ड मल्टीपल इंटेलिजेंस, बी है चिल्ड्रन वर्क इंडिविजुअली टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट, सी है टीचर प्लान असेसमेंट एवरी डे, एंड डी है टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू ओबे एंड बी डिसिप्लिन। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि जो चाइल्ड सेंटर लैंग्वेज क्लासरूम के फीचर्स हैं वो होता है चिल्ड्रन इंटरेक्ट इन द टारगेट लैंग्वेज थ्रू टास्क दैट रिक्वायर्ड मल्टीपल इंटेलिजेंस। आगे बढ़ते हैं। Schools need to become center that prepare children for life and that all children, especially the differently abled children from marginalized sections and children in difficult circumstances, get the maximum benefit of this critical area of education. This observation found in the National Curriculum Framework 2005 is related to, तो this is related to ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, जेंडर इक्वालिटी, क्रिटिकल पेडागॉजी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो राइट आंसर होगा इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। आप इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे तो उसमें मार्जिनलाइज सेक्शन के बारे में दे रखा होता है। नेक्स्ट है इन लार्ज लैंग्वेज क्लासेस ग्रुप वर्क कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय। तो ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट टू टर्न अराउंड फॉर ग्रुप वर्क, बी है आस्किंग ऑल स्टूडेंट टू स्टैंड इन अ सर्कल, आस्किंग हाफ द क्लास टू गो आउट टू द प्लेग्राउंड, एंड डी है आस्किंग 4-5 स्टूडेंट्स टू सिट टुगेदर ऑन नैरो बेंच डिस्पाइट लैक ऑफ स्पेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आस्किंग ऑल students to stand in a circle. B is the right answer. ठीक है, in large language classes group work can be accomplished by asking all students to stand in a circle. Next है inquiry based learning। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। A encourage quiet learners, B है does not nurture creative thinking in students, C है allow learners to raise questions, and D है does not place student in thought provoking situations। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन C, allow learners to raise questions। allow learners to raise question, inquiry based learning। नेक्स्ट है a teacher can develop listening skills in English by। ऑप्शन है ए फोकसिंग ओनली ऑन लिसनिंग स्किल्स विदाउट एसोसिएटिंग इट विद अदर लैंग्वेज स्किल्स, बी है मेकिंग द लर्नर्स लिसन टू एवरीथिंग दे हियर पैसिवली, सी है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू लिसन टू वैरायटी ऑफ सोर्सेज एंड पीपल एंड इंगेज इन लिसनिंग एक्टिविटीज, डी है स्पीकिंग टू देम कॉन्टिन्यूसली बोथ विद इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू लिसन टू अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज एंड पीपल एंड इंगेज इन लिसनिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Seventh, which of the following will be most effective to remove conventional beliefs about gender roles? Option है teaching all the learners to sweep, wash and sew in the craft without any gender discrimination. B. Encouraging girls to develop interest in household chores from a young age. C. Telling the girls that taking freely is not a trait of good girls. And D है showing a picture in which the mother is seen cooking and the father is seen reading newspaper. So which is of the following will be most effective to remove conventional belief about gender roles? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A. Teaching all the learners to sweep, wash and sew in the craft without any gender discrimination. Okay. नेक्स्ट है ए प्ले कैन बी बेस्ट टॉट बाय. ऑप्शन ए है encouraging the students to state the play after working in groups to understand the plot, character, etc. Option B is asking a number of questions to test the comprehension of the students. C. Conducting a test with specific questions on the story and grammar item. And D is making the students read it silently number of items to understand the story. The right answer is of this question, a play can be best taught by. The right answer is encouraging the student to state the play after working in groups to understand the plot, characters, etc. Right answer is option A. A play can be best taught by encouraging the student to state the play after working in groups to understand the plot, characters, etc. Next question 9. Fluency in English can be developed through. Option A. The teacher talking for most of the time. B. The teacher being alert to spot errors and correct them. C. Allowing students who are not confident to have freedom to be quiet. And D. Creating opportunities to use the target language for communication. The right answer is fluency in English can be developed through creating opportunities to use the target language for communication. Option D is the right answer. Next, some noise in the language class indicates. Option A. Teacher's lack of control over the class. B. Incompetence of the teacher. C. Constructive activities with learners engaged in language learning. And D. Indiscipline of learners. So answer is option C. Constructive activities with learners engaged in language learning. Some noise in the language class indicates constructive activities with learners engaged in language learning. Next question. A test to assess the potential of students for specific abilities and skills such as music, spatial abilities or logical abilities called a.Aptitude test, b.Attitude test, c.Achievement test and d.Proficiency test. The right answer is aptitude test. Okay, logical abilities called aptitude test. Next question is effective learning takes place when students are a.Interactive, b.Quiet, c.Good at preparing for examination and d.Passive. The right answer is a.Interactive. Effective learning takes place when students are interactive. Next is which of the following is best suited for improving the speaking skills of learners? Option A is leading a prose and drama aloud. B. Oral language drill. C. Debates and group discussions. And D. Discussions followed by role play. And D. Recitation of poetry.
तो राइट आंसर इज right answer is debates and group discussion followed by role play. Okay, is best suited for improving the speaking skills of learners. Debates and group discussions followed by role play. Next question is the right of children to free and compulsory education Act 2009 has overall development as an aim. It means option A is nurturing both the scholastic and co-scholastic areas. B. Coaching all the children for academic excellence. C. Training the children for different careers. D. Training the children for the development of the country. The right answer is option A. Nurturing both the scholastic and co-scholastic areas. Question is the right of children to free and compulsory education Act 2009 has overall development as an aim. It means nurturing both the scholastic and co-scholastic areas. Next and last question is, last not least, 15. A class is reading a story based in a village. The teacher asks some students to mark the villages in an outline map of their locality. Some other students are asked to collect information about the different crops grown in these villages. Yet another group works on the nutritional value of the grains, fruits and vegetables grown in the locality. Later, the students exchange their work and have a class discussion relating the information with the story. What is the underlying principle of this approach? Right answer is option is A. Making connection across disciplines and bringing out the interrelatedness of knowledge. B. Teaching language through written assignments and projects. C. Giving importance to the practical and scholastic aspect of literary piece. And D. Creating knowledge in a specific segment based on geography. So answer is option A. Making connections across disciplines and bringing out the interrelatedness of knowledge. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यहीं पर एंड होते हैं 15 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि अगर आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जो हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड ही कुछ पूछा जाता है। तो आपको प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियोस आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।